Assalamu alaikum. Today we'll discuss the clinicals of the oral and nasal cavity. So I'm Dr. Sadia. So this is a picture of how the face is formed embryologically. So we need 5 processes. One is the frontonasal processes, and which is unpaired, and the two paired maxillary and mandibular processes. Okay, so this is the maxillary process. This is the mandibular process. And what actually happened, over the frontonasal process there's a nasal placode means there's a thickening over the frontonasal process, which further divided, then it develops, then placode develops a pit in it, and then the pit divided into the medial nasal process and the lateral nasal process. Okay, so what are the derivatives of the medial nasal process? The medial nasal process actually forms the intermaxillary segment. And what is the intermaxillary segment? It forms the philtrum of the lip, and it forms the primary palate. It forms the primary palate. It forms the alveolar arch that contains the जो है आपके central incisors and the lateral incisors. So it forms the intermaxillary segment, and the rest of the lip, the mid of the lip is given by the medial nasal prominence, and the lateral part of the lip given by the maxillary prominence, and the lower lip is formed by the mandibular prominence. So these are the maxillary prominences, and the middle portion to the lip is given by the medial nasal prominence, and the lower lip is formed by the mandibular prominence. These are the paired processes. Maxillary prominences are the paired prominences, and they are derived from the first branchial arch. And this is a mandibular prominence forms the lower lip, and these are the maxillary prominences, and this is from the philtrum of the lip. Okay, and the cupid boards and the filtral bars, these all given by the medial nasal prominence. Along with it, it gives a part of the alveolar arch, which gives the two central incisors and the two lateral incisors, and at the back it gives the जो है आपका primary palate up to the incisive foramen. So this is the philtrum, and these are the lateral part of the lips, and it gives the philtrum. Achha, so these 5 processes forms and contributes in the formation of the upper lip and the lower lip, and the maxillary prominences forms the cheeks, and so these lateral nasal prominences forms the ella of the nose. Acha, medial nasal prominence also forms the septum of the nose and the tip of the nose. This also, except the intermaxillary segment, it forms the septum of the nose and tip of the nose. So from the around 4 to 10 week, in this period the face has formed. This is again, these are the maxillary prominences. This is from the mid part of the lip, that is the philtrum of the lip, and these are the जो है आपका lateral nasal prominences. These lateral nasal prominences forms the ella of the nose, and this is intermaxillary segment. This is again the philtrum of the lip, and the rest of the lip is formed by the maxillary prominences, and the ella of the nose formed by the lateral nasal prominences. This medial nasal prominences forms the septum of the nose and the जो है आपका tip of the nose. Okay. This is a segment, alveolar arch. In the alveolar arch, 2 central incisors and 2 lateral incisors. This segment, along with the primary palate up to the incisive foramen, this is the primary palate, and this is the part of the alveolar arch, and this is the part of the mid part of the lip. So this whole intermaxillary segment is formed by the medial nasal prominence. Okay, so this is the intermaxillary segment, and this is called primary palate, part of the alveolar arch, part of the mid of the lip, that is called the philtrum of the lip. So this whole intermaxillary segment is formed by the आपका medial nasal prominence. By rest of the lip,
rest of the upper lip is formed by the maxillary prominence, and these lateral nasal prominences contribute in the formation of ala of the nose. Okay, we'll switch forward. So what is unilateral cleft lip? आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है ये यूनिलैटरल क्लैफ्ट लिप. आप पीडियाट्रिक्स में चले जाएं, आप प्लास्टिक सर्जरी में चले जाएं, तो द न्यू बॉर्न बेबीज, इवन द एडल्ट्स जिन्होंने अभी ऑपरेट नहीं कराया, दे विल कम विद दिस कंडीशन. ठीक है, तो unilateral cleft lip are characterized by disruption of the lip. It means there is a slit in the lip, there is no continuity in the lip. Nostril sill and the alveolus, complete primary palate is involved. It means the sill of the nose is also involved. What is the sill of the nose? I will tell you in a while. Everything I will tell you. And the alveolus, which contains the 2 central incisors and 2 lateral incisors, they are also involved in the unilateral complete cleft lip. This is a picture of unilateral complete cleft lip. So unopposed pull of the orbicularis oris muscle results in a more severe nasal deformity, because the fibers of the orbicularis oris will give a abnormal pull to the nose and causes the severe nasal deformity. Treatment is surgical correction by the plastic surgeon. So we'll switch forward. So there's a complete a non-union of the 2 sides of the lip. Okay, and it is going into the nose, because this part of the septum of the nose, and this is completely, the sill has involved. In this side the nasal sill is there, but in this side the nasal sill is completely involved. And what happened, the part of the alveolus is also is having a cleft. Along with the cleft in the lip, there is a cleft in the alveolus as well. Okay, so there is malformation of the incisors, central incisors and the lateral incisors in the baby. Okay, what other thing which is common in the unilateral cleft lip? Cleft of the primary palate, cleft of the primary palate, cleft of the lip, which is going up into the nasal sill. And so the on the side of the cleft, there's a nasal, prominent nasal deformity is there. Side the cleft in the alveolus and the cleft in the primary palate. So this whole intermaxillary segment is involved. If the medial nasal prominence will not completely unite the maxillary prominences, or there is it is somewhat deficient. So in the whole of the area of the lip, there is a deficiency, and the patient or the baby born with a unilateral complete cleft lip. So there is a cleft in the lip, there is a cleft in the alveolar arch, or there is a malformation of the incisors, and there is a cleft in the primary palate. So this is called a cleft in the intermaxillary segment, or there's a null union of the intermaxillary segment to unite with the maxillary prominences. And if this happens, the patient develop the unilateral complete cleft lip. तो इस बच्चे में क्या क्या होगा, आपको you have to correct the lip, you have to correct the nasal deformity, and you have to put a bone graft in the alveolus, ताकि वो जो later on जो teeth erupt होने हैं, incisors erupt होने हैं, तो वो आराम से बेबी को कोई प्रॉब्लम ना करे, वो eruption प्रॉपर हो जाए. और प्राइमरी पैलेट को आपने क्लोज करना है, बिकॉज इफ देयर इज अ होल इन द प्राइमरी पैलेट, वट एवर ईट्स और वट एवर ड्रिंक्स बाय द बेबी, जो सिर्फ दूध अगर पी लिया, तो इट कम्स आउट फ्रॉम द नोज. तो देयर इज अ स्लिट हियर, and whatever the baby eat or drink will come out from the nose. Nasal regurgitation होगी. समझ आया आपको? अच्छा, we'll move forward. What is bilateral cleft lip? The bilateral cleft lip is with protruding premaxilla, because the lack of the connection of the premaxilla with the lateral palatal shelves. Anterior nasal spine जो है is poorly formed. ये premaxilla क्या है? The premaxilla is a part of the alveolar arch, and the
जो है आपका प्राइमरी पैलेट है, which is actually in the bilateral cleft lip, the two sides of the intermaxillary segments are not unite with the maxillary processes, and that complete process of the intermaxillary segment will come out. I will show you in a while. And the anterior nasal spine is poorly formed, small or no columella with prominent nasal deformity, and the treatment is surgical correction by the plastic surgeon. So we'll move forward. So this is that intermaxillary segment. This is the part of the mid of the lip. Okay, so these are the maxillary prominences. These are the lateral part of the lip. This is actually a intermaxillary segment. This is the skin of the or part of the lip, and underline we have a जो है आपका alveolar arch is there, and we have a primary palate is there. So it is the whole segment is जो है moving in air, and it is not completely united with the maxillary processes. अच्छा तो ये जो है ना, so then we will try to fix it with the maxillary prominences in the surgery. So there's a very flat nose, there is no anterior nasal spine, there's a complete nasal deformity. तो पिच का हुआ nose होता है इनके अंदर काफी. So this see this nose after correction we have fixed the in the surgery we have fixed the intermaxillary segment with the maxillary processes. देख रहे हैं ये सारा का सारा बाहर निकल रहा होता है, and sometimes it is very difficult to for the surgeon to make it back and make an alignment with the rest of the structures. समझ आ गया आपको? सो इस ये जो ये प्रोट्रूडिंग प्री मैक्सिला था, इसके अंदर क्या क्या है? दिस इज एक्चुअली इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द पार्ट ऑफ द लिप व्हिच कंटेन्स द एल्वुलर आर्च, व्हिच एल्वुलर आर्च में क्या होते हैं? आपके इंसीजर्स होते हैं. अगर सपोज किसी बंदे ने सर्जरी नहीं कराई तो उसके इंसीजर्स भी उसी के साथ या मेलफॉर्म्ड होंगे या नहीं होंगे, या फिर वहीं पर अटैच्ड होंगे, लेटर ऑन यहीं पर डेवलप हो जाएंगे इंसीजर्स भी. सो ये मेल रोटेटेड हमारा जो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट था विच हैज नॉट यूनाइटेड विद द on the two sides with the maxillary processes, we have fixed it with the जो है आपका maxillary processes and makes the continuity of the upper lip. ठीक है बेटा? So this is the upper lip. Okay. So what is primary palate? The primary palate consists of the lip, alveolus, and the anterior palate back to the incisive foramen. Primary palate is actually derived from the medial nasal prominences, and the palate which is starts from the जो है आपका alveolar arch and going back towards the incisive foramen, this is primary palate. ये intermaxillary segment का ही part है. तो इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट में लिप आता है, एल्वुलस आता है, एंटीरियर पैलेट आता है. तो प्राइमरी पैलेट इज एक्चुअली एन एंटीरियर पैलेट, ठीक है, विच इज अप टू द इंसिसिव फोरामेन. एंड द सेकेंडरी पैलेट, अब ये क्लेफ्ट की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी पैलेट क्या है. अब बच्चे में क्लेफ्ट है, कंप्लीट क्लेफ्ट है, पैलेट में क्लेफ्ट है, लिप में क्लेफ्ट नहीं है. ठीक है, तो अब हम पैलेट को डिवाइड कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पैलेट एंड व्हाट इज द सेकेंडरी पैलेट. प्राइमरी पैलेट इज ड्राइव फ्रॉम द मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, ठीक है, एंड इट इज मोस्टली in 90% of the cases or 99% of the cases associated with the deformity of the lip and deformity of the alveolus. ठीक है, and it is part of the intermaxillary segment. The secondary palate consists of the hard and the soft palates from the incisive foramen back to the uvula. ठीक है, if the the जो आपका cleft है, it is present in the secondary palate behind the incisive foramen and it involves the hard palate and the soft palate. So this is called secondary palate. अभी हम discuss करते हैं. The presence of cleft palate introduces the feeding difficulties. मैंने आपको बताया there is a slit, so this palate is actually providing a जो है आपका sheet
that separates the oral cavity from the nasal cavity. When there is a defect in that palate, what happens? The whatever the patient eats or drinks will come out from the nose. This is called nasal regurgitation. So the feeding difficulties and concerns regarding the speech development, that those patients have a problem of cleft lip or palate, they will develop the speech difficulties as well. They will not properly जो है pronounce the words regarding to the speech development. And so that's why we will arrange the speech therapist for them. And the possibility of impaired facial growth, obviously there is a cleft in the lip or palate, so it will give you a impaired facial growth. So if we have addressed this problem very early, then the facial growth is okay. So treatment of surgical correction by the plastic surgeon. So in this, the not only the plastic surgeon but the speech therapist and the जो है psychotherapist. So these patients mostly will go into a psychosis कि हमारा face जो है looks bit abnormal and this and that. So we need a psychotherapist, we need a speech therapist, we need a जो है आपका maxillary जो है ये क्या नाम है ऑर्थो जो गिनेथिस्ट होते हैं उन वो चाहिए. सो द मैनी पीपल आर इन्वॉल्व. मैक्सिलोफेशियल सर्जन चाहिए. सो बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं इन क्लेफ्ट वाले लोगों को डील करने के लिए. सो बेटा दिस इज द यूनिलैटरल प्राइमरी क्लेफ्ट पैलेट. ठीक है. ऑन द वन साइड द प्राइमरी पैलेट, द लिप, द एल्वुलर आर्च एंड द प्राइमरी पैलेट इज इन्वॉल्व. ठीक है. This is on the both side, the cleft of the primary palate is there. This happens in the bilateral cleft lip. This happens in the unilateral cleft lip. ठीक है. Bilateral cleft lip में ये पूरा जो part है आपका intermaxillary segment, it is not with the maxillary prominences. This is out of the maxillary prominence. इसको कहते हैं protruding premaxilla. ये पूरा का पूरा हिस्सा निकला हुआ होगा बाहर और बाहर घूम रहा होगा. तो आपने उसको प्रॉपरली जो है वो मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस के साथ बीइंग अ सर्जन इसको फिट करना है. ठीक है. सो दिस हैपेंस इन द बायलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड दिस हैपेंस इन द यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप. ठीक है. अच्छा, इफ द प्राइमरी पैलेट, this is the incisive foramen, if the primary palate and the secondary palate is involved. ठीक है. So this is a so this part of the maxillary palate actually reaches up to the target, but this part of the palate will not unite with the जो है आपका ऑन द ऑपोजिट साइड. यहाँ पर क्लेफ्ट रह गया, ये अपनी जगह पर नहीं पहुंच सका. तो दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप. This is called the unilateral complete cleft lip. In this, the जो है आपका primary palate is involved, the secondary palate is involved, and the soft palate is also involved up to the uvula. What is this? This is cleft in the primary palate on the both side. This is cleft in the primary palate on the one side. यानी unilateral cleft lip होगा तो unilateral जो है cleft in the primary palate होगा. ठीक है. So this happens when the baby born with the unilateral cleft lip, but the cleft in the palate is complete in the primary palate up to the incisive foramen, and beyond this incisive foramen the cleft is there. So this is unilateral complete cleft lip. ठीक है. And this is unilateral, this is bilateral complete cleft lip और bilateral complete cleft lip है. bilateral lip भी involve है. primary palate intermaxillary segment पूरा involve है. bilateral cleft in the primary palate, bilateral cleft in the lip, bilateral cleft in the primary palate, bilateral cleft in the hard palate यानी secondary palate up to the uvula. समझे आप? So there is a slit or opening or a cleft in the palate. This is a secondary palate. This is a cleft in the secondary palate. There is no cleft in the lip or no cleft in the primary palate. समझ आ गया? So
The primary palate is actually derived from the medial nasal prominence, and the secondary palate is actually derived from the maxillary prominence. So this is all about the palate, the unilateral complete, bilateral complete, और ये जो है cleft in the secondary palate, and this is cleft, bilateral cleft in the primary palate. This is the unilateral cleft in the primary palate. So this is all about the जो है आपकी classification of the palate. So what the surgeon do? It can repair the mucosa. So it is very difficult to cover the bony gap. यहाँ हम bony gaps को address नहीं कर सकते, ठीक है? The one side of the cleft, one side of the palate is normal, and other side is जो है leaking. It is not completely and जो है reached up to a central line. तो यहाँ पर अगर defect हो गया है, तो the bony defect is not covered. But what we can do, we can incise this tissue over the bony palate, and we try to unite them in the middle. So that's how we will cover the gap in the palate. So this is the secondary palate, the unilateral lip and primary palate. This both side the unilateral, both side the complete bilateral lip and the bilateral cleft in the primary palate. This is the complete cleft lip and the palate, in which the lip, the primary palate and the secondary palate up to the uvula is involved. In this, the bilateral cleft in the lip, in the primary palate and in the secondary palate as well. ठीक है, तो इसको हम इसी तरह यूनाइट करेंगे. द बोनी कैप को यूनाइट करना डिफिकल्ट है, तो विल रेज द फ्लैप्स ऑफ द टिश्यू like this over the bony plates, and then we will जो है stitch in between, in the center. So by the tissue we can cover this bony gap. Otherwise, to fill the bone here, it is a bit difficult. Okay, so what is lingual thyroid? The lingual thyroid is a mass of the ectopic thyroid tissue located at the base of the tongue. So this is the tongue, ठीक है, and this is the lingual thyroid, ठीक है, and caused by the developmental anomaly of the descent of the thyroid gland, when the thyroglossal duct actually will not go its position, and then it develops the thyroid gland here. Sometimes the part of the tissue is present at the base of the tongue, but most of the time there's no tissue in the neck, only tissue is at the base of the tongue. So this is lingual thyroid, and after the removal of this, patient develops the condition of hypothyroid. So patients with the lingual thyroid may present with symptoms including the cough, the hoarseness. The lingual thyroid may present with the symptoms including the hoarseness, the cough, and the sleep apnea, and most are asymptomatic. Okay, mostly the people are asymptomatic, but a few have complaints of cough, hoarseness, and the sleep apnea. Difficulty when they sleep, lie down, they feel the dyspnea. Air obstruction is rare. Over half of the patients are hypothyroid, and clinically visible lingual thyroids appear as a submucosal smooth mass at the base of the tongue. So what is the treatment of this? To the removal of lingual thyroid if it is creating a problem, or we can remove the part of it, and we can remain the some tissue behind it, because the patient will develop the hypothyroid condition. Achha, what is tongue tie? This is called ankyloglossia. This is a condition in which an unusual short, thick, tight band of tissue. This is a band of tissue. Short, thick, tight band of tissue. This is called lingual frenulum. Tethers the bottom of the tongue tip. This is the bottom of the. This is a tip of the tongue, and it जो है tethers the bottom. Bottom means the floor of the tongue to the floor of the mouth. So it tethers the bottom of the tip's tongue to the floor of the mouth. It is necessary, if necessary, tongue tie can be treated with a surgical cut to release. हम यहाँ से इसको cut करके इसको निकाल देंगे. This operation is called frenotomy.
ठीक है. So what this tongue tie will do? So this is again a tongue tie. This causes the patient, it causes a difficulty in speech. तो ये बच्चे जो होते हैं दे विल नॉट टॉक प्रॉपरली. कैसे प्रॉपरली टॉक करेंगे? एंड दे ऑल्सो हैव अ डिफिकल्टी इन जो है आपका जो है chewing and swallowing. They also feel difficulty in eating and they also feel difficulty in producing or pronouncing their words. ठीक है. So difficulty in speech and difficulty in eating. बहुत 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 चीज़ें होंगी. So इसको आप फ्रेनोटॉमी कर दें और इसको निकाल दें. ठीक है. सो फ्रीनोटॉमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टंग टाई और एंकाइलोग्लासिया. ठीक है. इसको अपनी जबान में एंकाइलोग्लासिया कहते हैं, वैसे लेमैन में इसको टंग टाई कहते हैं. ठीक है. Sometimes this tongue tie is anterior and sometimes this tongue tie is very posterior. So being a doctor, you have to check whether this band is a short thick band which is uniting the floor of the tongue to the floor of the mouth and causes the difficulty in speaking and the swallowing. तो ये ज़रूरी नहीं है कि it is always present in the anteriorly in the floor of the tip of the tongue and then joins the फ्लोर ऑफ द माउथ. ये पोस्टीरियरली भी हो सकता है टंग में. ठीक है. सो यू हैव टू चेक द फ्लोर ऑफ द माउथ कंप्लीटली वेदर दिस इज टंग टाई और नॉट. जो बच्चे लेट बात करते हैं या नहीं बात कर पाते तो उनमें ये चेक करना टंग टाई और एंकाइलोग्लासिया इज वेरी नेसेसरी. सो दिस इज द पिक्चर. अच्छा, ओके. What is the ranula? Ranula is a mucus extravasation cyst. ये देख रहे हैं आप in the floor of the mouth. This mucus extravasation cyst has developed involving a sublingual gland. मैंने आपको बताया था the sublingual gland has many ducts. ठीक है. And they are opening in the frenulum of the tongue. ठीक है. 15 around tongue ducts होती हैं that opens into the frenulum of the in the floor of the mouth. And it is a type of a mucocele found in the floor of the mouth. Traditional method surgery for an oral ranula is the complete excision of the ranula. We completely excise this ranula and associated major salivary gland. कौन सा salivary gland आप remove करेंगे? Sublingual gland. ठीक है. When the duct is blocked, the patient develops this mucocele, mucus retention cyst. ठीक है. So this is a mucus extravasation cyst develops in the floor of the mouth due to the obstruction of a duct of the sublingual gland. And when this develops, what we will do, we'll remove this whole of the cyst along with the gland which is causing this problem. Okay, and that is the sublingual gland. Okay, move. So this is again a picture of the ranula. ये देख रहे हैं ranula. Sometimes हम सिर्फ cyst निकाल देते हैं और चेक करते हैं कि there जो है अगर if there is the problem is again and again recurrence of the problem occur, अगर बार बार ये cyst बन रही है फिर तो आपको gland anyhow निकालना पड़ेगा. लेकिन अगर बेटा ये पता नहीं क्या आज जो मीटिंग है ना वो उसके मिनट्स कुछ शॉर्ट हो रहे हैं. ये आज वो अनलिमिटेड वाला चक्कर नहीं है, पता नहीं क्या. तो रिमेनिंग मिनट्स आर 4. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ. सो दिस इज रेनुला. अच्छा, नाउ इट्स अनलिमिटेड. गुड. So this is a ranula on the one side, or this is on the, I think both side, or it's on the one side. देख रहे हैं ये ranula, this is mucus extravasation cyst. Sometimes we will remove a cyst, or sometime जो है we will wait कि whether there is any recurrence or not. If there is recurrence, then you have to remove the sublingual gland as well. ठीक है मेरा बच्चा. So this is mucus extravasation cyst due to the obstruction of a duct of the sublingual gland. This is called ranula. So laceration of the tongue, very very common, mostly occur in those patients which are in jail or mostly in those who are जो है epileptic. ठीक है. तो जैसे ही उनको epileptic का अटैक होता है तो टंग बीच में आ जाती है. So laceration of the tongue, a wound of the tongue is often caused by the patient's teeth. मतलब दांतों के बीच में आ जाती है. ठीक है. टंग जो है वो दांतों के बीच में आ जाती है. Following a blow on the chin,
when the tongue is partly protruded, आपने टंग जो है थोड़ी सी निकाली हुई है और किसी ने आप मुक्का मार दिया तो क्या होगा, टंग में lacerations आ जाएंगे. So on the chin, when the tongue is partly protruded from the mouth, and it can also occur when accidentally bites the tongue while eating. हो जाता है बहुत दफ़ा आप खाते हुए आपके टंग जो है वो दांतों के बीच में आ जाती है. During recovery from an anesthetic or during an epileptic attack, mostly epileptic attacks के में होती है और बहुत सीवियरली जो उन बेचारों की जो टंग है वो लेसरेटेड हो जाती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनको पता नहीं होता किस वक्त टंग जो है वो दांतों के बीच में आ गई. दिस मोस्टली कॉमन दीज लेसरेशन, एक तो ट्रॉमा में बहुत कॉमन है और दूसरा एपिलेप्टिक अटैक्स में. द ब्लीडिंग इज हॉल्टेड बाय ग्रेस्पिंग द टंग. आपने क्या करना है, if the tongue, because tongue is a highly vascular organ, if it is bleeding, what you have to do, you have to do you have to grasp the tongue between the finger and the thumb posterior to the laceration. जहाँ पर कट आया हुआ है उसके posteriorly जाके आपने टंग को थोड़ा दबा के पकड़ लेना है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. thus occluding the branches of the lingual artery. ऐसा करने से branches of the lingual artery है थोड़ी देर के लिए suppress हो जाएंगे. ठीक है, तो these are the lacerations of the tongue and how you have to stitch these lacerations. फिर आपने move करना है to the जो है hospital and they will stitch the laceration of the tongue like this. So this is the treatment. Okay, stitching is the treatment till you have to grasp the tongue posterior to the laceration between the finger and the thumb. ये आपने for a time being उसको bleed होने से रोकना है इस तरह ताकि lingual artery ज़्यादा bleed ना करे. So this is the treatment. ठीक है. What is angioedema of the uvula, जिसको आप कहते हैं Quicken's uvula. uvula जो है वो swell up हो जाए. Uvula has a core of voluntary muscles, the musculus uvulae, attached to the posterior border of the hard palate. Uvula के अंदर voluntary muscles होते हैं, ठीक है, and it has a musculus uvulae muscle that is attached to the posterior border of the hard palate. Surrounding the muscle is a loose connective tissue of the submucosa that is responsible for the great swelling in this structure secondary to angioedema. Move. So this is a जो है Quicken's uvula, angioedema of the uvula, and this is, so this actually causes the problem in the respiration. ठीक है, and then you have to deal this angioedema by giving some antibiotics and some painkillers, and so this is actually causes the when it is very much swell, what it or you have to do the operation and reduce the size of the uvula. So this is angioedema of the uvula. This is called the Quicken's disease. If it is if there is an inflammation, so you have to give some antibiotics and this and that, but if it is due to the improper drainage of the lymphatic, then what you have to do, you have to downsize the uvula. ठीक है, so अच्छा, okay. What is tonsillar hypertrophy? The tonsillar hypertrophy on enlarged tonsils can be caused by an ongoing chronic condition, be a temporary effect of an infection. So what are the what happened? What are the symptoms in the enlarged tonsils? Difficulty breathing through the nose. ठीक है, तो आपने देखा होगा जिनके enlarged tonsils होते हैं उनका मुंह थोड़ा खुला रहता है और जो है ज्यादातर मुंह से सांस लेते हैं. Mouth breathing, noisy breathing, loud snoring, obstructive sleep apnea, restless sleep, daytime sleepiness, and constant runny nose. These are the symptoms by which the patients suffer. Okay, so these are the hypertrophied tonsils, and doctor might recommend a medicine to shrink the tonsils. Antibiotic दे देते हैं, बच्चों को बार बार फीवर हो जाता है, sore throat हो जाता है,
और जो है पेशेंट्स बड़े जो है बेचारे परेशान रहते हैं। सो अल्टीमेट ट्रीटमेंट, जब थोड़े एज बेटा बढ़ती है ना, तो एडल्ट होने लगते हैं, तो ये खुद ही श्रिंक कर जाते हैं। मगर if they are creating lot much problem, then the patient has to undergone tonsillectomy. ठीक है। अच्छा, what is epistaxis? Nose is highly vascular organ, so any trauma or if your nose is scratched, pegged, it can bleed. अगर आप थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं, हाईली वेस्कुलराइज होता है, मैंने आपको बताया, इट इज सप्लाइड बाय द 5 आर्टरीज, एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टीरियर एथमोइडल, स्फिनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन एंड लेसर पैलेटाइन। सो दीज 5 arteries जो है, they are supplying the nose and it is highly vascularized. So whatever the trauma occurred to the patient or the जो है himself जो है, it scratches the nose or picks the nose, that causes the severe bleeding. Treatment is to apply the nasal pressure or the nasal packing till the bleeding stops. तो ये देखें आप, कितनी आर्टरीज, एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टीरियर एथमोइडल या ऑप्थेल्मिक की ब्रांचेस होती हैं, और स्फिनोपैलेटाइन मैक्सिलरी की ब्रांचेस होती हैं, ग्रेटर पैलेटाइन, लेसर पैलेटाइन, दे आर आल्सो ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी। so they unite and they form a castle backs, जो है आपका plexus or phenomena or little area. So whenever any trauma to the nose occur, the nose will bleed profusely, और किसी को ऐसे भी हो जाता है nasal bleed, ठीक है, या कोई स्क्रैच किया है या कुछ चीज़ से आपने नोज में डाली है तो वो उसकी वजह से प्रिक हो गया है। सो ये कॉजेज द सिवियर ब्लीडिंग एंड द ट्रीटमेंट इज टू पैक द नोज इनसाइड। ये पूरा आपने नोज के अंदर पूरी पैकिंग डाल दी है to stop the bleeding. This is the only treatment to stop this, कि आपने अंदर एक साइड जहाँ से ब्लीड कर रहा है वहाँ पर आपने नेजल पैकिंग डाल दी और पैकिंग का थोड़ा सा हिस्सा आपने बाहर छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही आपको लगेगा कुछ देर के बाद कि अब नेजल ब्लीडिंग स्टॉप हो गई होगी, तो आपने ये पैक जो है निकालने के लिए इसका जो पार्ट है बाहर छोड़ना है, ताकि आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर बाहर खींच लें। ठीक है बेटा। So this is the treatment of nasal packing, and mostly occur in the nasal, those who are nasal bleeding due to trauma की वजह से हुआ है तो भी आप nasal packing करेंगे, और वैसे हो रहा है बच्चों को, वैसे बच्चों में थोड़ा सा सर वगैरह पीछे कर लेते हैं तो भी सही हो जाता है, अगर नहीं सही हो रहा तो फिर nasal packing करनी पड़ेगी। ओके, फॉरेन बॉडीज इन द नोज, देख रहे हैं ये नोज के अंदर कुछ डाला हुआ है, इसने टॉफी डाली हुई है या कुछ डाला हुआ है। तो फॉरेन बॉडीज इन द नोज आर कॉमन इन चिल्ड्रन, द प्रेजेंस ऑफ अ नेजल सेप्टम, सो दिस इज अ सेप्टम इन बिटवीन, एंड द एक्सटेंसिव ऑफ द फोल्डेड शेल्फ, ये जो लेटरल वॉल है इसमें शेल्फ होते हैं, कॉन्कीज होते हैं। मेक इम्पैक्शन ऑफ द बलून्स डाल देते हैं, समटाइम्स पीस डाल देते हैं, समटाइम्स स्मॉल टॉयज दे पुट इनसाइड द नोज। सो दिस इज अ, then it creates the problem, and then the kids feel there is a difficulty in breathing. So what the parents do, they take him to the hospital, and then the hospital staff will try to remove this from the objects from the nose। ठीक है। सो देखें ये द डॉक्टर इज रिमूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नोज। ये देखें स्पैक्यूलम है, स्पैक्यूलम से इसने नोज को ओपन किया हुआ है, फिर एक लंबा सा स्पैक्यूलम होता है, फॉर्सेप की तरह होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको हम निकालते हैं नोज से। कुछ भी हो सकता है, कोई पीस हो सकता है, कोई जैसे ये चने होते हैं वो डाल देते हैं, मेरी बहन होती थी छोटी, वो चने डाल देती थी नोज के अंदर। तो ये mostly then we'll take the patient to the ENT department and they will tackle the problem. So fractures of the nose very common, हमारे यहाँ जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन। ठीक है, और जो है कोई जो है कोई लड़ाई हो गई जिसमें कोई पंच वगैरह नोज पर आ गया, तो मोस्टली दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल डैमेज और फ्रैक्चर्स द नोज। तो नेजल बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। इफ द what is the actual anatomy of the nose, the nasal bones and the rest of the nose is formed by a cartilage, the upper lateral cartilage and the lower lateral cartilages. So
any trauma to the nose will fracture the nasal bones, which is very common. Either there is a road traffic accident, or due to any quarrel, the patient develops the fracture of the nose. Blows directed from the front may cause one or both nasal bones to be displaced downward or inward, and the nasal septum is usually involved. ठीक है? The correction of the nasal fractures by the closed and the open methods of the surgery. Closed, if there's a small trauma, what happen, actually doctors actually try to fix the nose बाय अ क्लोज मेथड. कुछ ज़्यादा इंसिशन वगैरह नहीं होता, बहुत छोटा सा इंसिशन होता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बोन्स को अलाइन कर देते हैं. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिवियर ट्रॉमा है और नेजल बोन्स में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, तो फिर द डॉक्टर हैज़ टू completely open the nose and raise the flap and then fix the nasal bones. ठीक है ना? तो ये आप देख लें. So this is a normal nose and this is a fractured nose. तो किस तरह tilt हो गया ये अपनी जगह से. So this is the fractured nose after the trauma. See how the bone tilts to the other side. ठीक है, and the bleeding is also over. So this is the normal nose and this is the fractured nose. So if there is a small fracture or there is no problem in the alignment of the bones, then what we will do, we will fix it by the closed method. But if there's a multiple fractures or this alignment is totally actually disturbed, then we have to completely raise the flap of the nose and fix the nasal bones accordingly. ठीक है, move forward. Infection of the nasal cavity. Infection of the nasal cavity spreads to the paranasal sinuses, ठीक है, to the nasopharynx. Through the auditory tube, this infection goes to the middle ear. If possible, the organisms ascend to the meninges of the anterior cranial fossa along the sheets of the olfactory nerves through the cribriform plate and produces the meningitis or encephalitis. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी. So whatever the infection of the nose occur, they जो है spread to the paranasal sinuses like ethmoidal sinuses and frontal sinus, sphenoidal sinus, and maxillary sinus. So this is sphenoidal sinuses. This is the frontal sinuses. So this is spread to the paranasal sinuses through the cribriform plate. Here the olfactory mucosa is there, okay? And this is the this contains the olfactory nerves, okay, in the roof of the nose, and the olfactory nerve passes through the cribriform plate, and this infection through the olfactory nerves and their sheets enter into the anterior cranial fossa and causes the meningitis and encephalitis, many things. Okay? Or it can involve the sinuses, or it can involve the nasopharynx as well. Okay? And it via the auditory tube, it can reach the middle ear cavity and causes the repeated infection or recurrent infections of the middle ear cavity. So see how the nasal infection infects the paranasal sinuses to the meninges and the brain, and to the nasopharynx and to the जो है and through the auditory tube to the middle ear cavity. देखो छोटा सा infection है, but in different sites it can जो है spread or it can involve the many sites. ठीक है, अच्छा, इसलिए नेजल इन्फेक्शन को थोड़ा जल्दी ट्रीट कर लिया करें. What is nasal turbinates hypertrophy? बड़ी कॉमन होती है. Nasal turbinates are a normal outgrowths of the nasal side wall bone. They are covered in nasal cavity by the mucous membrane, and the turbinate hypertrophy is when these outgrowths become enlarged and obstruct the nose. क्या होते हैं? What are nasal turbinates? पहले तो ये समझने की चीज़ है. अच्छा, nasal turbinates actually these are the conchas. ठीक है, these are the shelves. One shelf, two shelf, three shelf. The mucosa over the shelf. ठीक है, and these are the three shelves in the lateral wall. And these conches are also called turbinates. These conches, other name is turbinate. So, and the mucosa is covering over the turbinates. When this mucosa, mostly those who are allergic
to spores, to dust, to many things. जो भी जिस चीज से इन्फेक्टेड होता है, जैसे ही वो चीज नाक के अंदर जाती है, तो दिस म्यूकोसा एक्चुअली हाइपरट्रोफी and causes the जो turbinates become hypertrophied, and this hypertrophy of the turbinate, ये म्यूकोसा जो है वो थोड़ी enlarge हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो सांस लेने में प्रॉब्लम करती है. It causes the difficulty in breathing. So we'll move forward. See, this is the superior conchi, middle conchi, and inferior conchi. This is an enlarged turbinate. ठीक है. Mostly this occur in fact those who are जो है allergic people को होता है. So this turbinate is enlarged. अब अगर आप यहाँ देखेंगे, this is the hypertrophy of the turbinate. The inferior turbinate is enlarged, and this in those people they mostly complain कि we have a difficulty in breathing. एक नाक बिल्कुल बंद है. This is occurred due to the hypertrophy of the mucosa over the conchi become enlarged and causes the obstruction in the nose. ठीक है. So this is called turbinate hypertrophy. अब आपको समझ आ गया कि lateral wall में जो आपके conchis होते हैं and the mucosa over the conchi become enlarged due to any allergic reaction and become hypertrophied and causes the obstruction in the nose. ठीक है. Move on. So what are the symptoms in those patients who have a turbinate hypertrophy? Makes it harder to you to breathe. सांस लेने में मसला होगा. ठीक है. It makes harder you to breathe through the nose. Some of the additional symptoms include altered sense of smell. जारी एक नाक बंद है तो sense of smell भी disturb होगा. Dry mouth open awakening. उठते हुए मुंह जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, विच हैपेंस व्हेन यू स्लीप विद योर ओपन माउथ एंड बिकॉज यू कांट ब्रीथ थ्रू द नोज. सांस आप नोज से तो ले ही नहीं ना, वो तो ऑब्स्ट्रक्ट है, तो मुंह से सांस ले रहे हैं. तो मुंह से सांस लेते लेते जो है मोस्टली आपने बच्चों को देखा होगा मुंह खुला हुआ होता है, वहां से सांस लेते हुए सोते हुए, तो मुंह जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, माउथ बिल्कुल ड्राई फील होता है. फोरहेड प्रेशर फील होता है, सर में दर्द होता है, मिड फेशियल पेन होने लगते हैं. ठीक है. एंड प्रोलॉन्ग नेजल कंजेशन फील होती है. ये मोस्टली एलर्जिक पीपल को होती है चीजें. रनी नोज, उनको सारा टाइम थोड़ी थोड़ी देर के बाद रनी नोज हो जाता है, नेजल कंजेशन हो जाती है, और रात को सोते हुए स्नोरिंग होती है. A doctor will you recommend at home treatments to shrink the nasal turbinates, reducing the amount of allergy causing जो डस्ट है, पैट डेंडर है. ठीक है. जो बच्चों के पास पैट्स होते हैं वो उसको उठाते हैं वहाँ से, पैट डेंडर जो होता है वो स्किन जो के स्लैक्स होते हैं कुछ, वो नेजल ब्रीथ के जरिए अंदर चले जाते हैं, तो बच्चे या बड़े उनसे जो है वो एलर्जिक होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि ये हमारे साथ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने पैड्स रखे हुए हैं. पैड्स में से हेयर्स जो हैं वो निकलते हैं, वो अंदर चले जाते हैं सांस में, और वो समटाइम्स एलर्जिक रिएक्शंस कराते हैं. मोल्ड कैन रिड्यूस एलर्जी सिम्टम्स वाइल अदर ट्रीटमेंट्स. अब तो सबसे सबसे बेहतर ये है कि जो आपको फील हो रहा है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है आप उससे दूर रहें, तो ये चीज़ें फिर बैक हो जाती हैं. आप एंटी एलर्जिक्स वगैरह लेते हैं तो ये चीज़ें श्रिंक हो जाती हैं. मगर कंटिन्यूस एक्सपोजर होता रहे एलर्जिन का तो फिर वेरी डिफ़िकल्ट है इसको ट्रीट करना. ठीक है. आज एक टर्मिनेंट एनलार्ज हुआ है, कल दूसरा हो जाएगा. मगर सबसे जो ट्रीटमेंट ये है कि जस्ट टू अवे द एलर्जन. What other treatments can ideally help in shrink the turbinates? The best treatment is to away from the allergen which causing the allergy. Acha, what is sinusitis? Infection of the paranasal sinuses. The sinusitis is a common condition or inflammation of the paranasal sinuses. The cavities that produce the mucus is necessary for them to drain effectively. कहाँ drain करते हैं? Lateral wall of the nose में. ठीक है. In the lateral wall of the nose, infection of the paranasal sinuses is a common complication of nasal infections. Mostly nasal infection will जो है वो invade the paranasal sinuses as well. ठीक है. Cause of maxillary sinusitis is extension from an apical dental abscess. Dental abscess हो तो maxillary sinus भी involve हो जाता है,
और आपके यहाँ पर चीक्स में और मैक्सिला में पेन होने लगता है, ठीक है। अगर फ्रंटल साइनस इन्वॉल्व होगा तो सेंटर ऑफ द फोरहेड में पेन होगा। अगर इथमोइडल साइनसेस इन्वॉल्व होंगे तो इनसाइड ऑफ द ऑर्बिट आपको जो साइड इनसाइड ऑफ द ऑर्बिट है वहाँ पेन होगा। अगर मैक्सिलरी साइनसेस इन्वॉल्व हैं तो अपर पार्ट ऑफ द चीक में पेन होगा। ये देखें यहाँ पर अगर मैक्सिलरी साइनसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको इन द अपर पार्ट इन द ये जो आपका चीक मीडियल पार्ट ऑफ द चीक है इसमें पेन होगा। अगर फ्रंटल साइनसेस ब्लॉक हैं तो ये आपको फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द फोरहेड में पेन होगा। अगर एथमोइडल साइनसेस हैं तो इनसाइड ऑफ द ऑर्बिट में पेन होगा, ठीक है। दिस इज स्फेनोइडल साइनस। मैक्सिलरी साइनस बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है क्योंकि उसकी जो ओपनिंग है वो उसकी रूफ में होती है। तो दिस इज द साइनस विच मोस्टली ब्लॉक। और यहाँ अगर म्यूकस भर जाए तो नीचे से ऊपर उसको जो है वो एम्प्टी होना पड़ता है। सो दिस इज द साइनस विच मोस्टली एक्चुअली इन्वॉल्व्स, ठीक है। तो कॉमन सिम्टम्स क्या है साइनस इन्फेक्शन के? पोस्ट नेजल ड्रिप होती है इन पेशेंट्स को, पीछे बलगम गिरता है, ठीक है। डिसकलर्ड नेजल डिस्चार्ज, ग्रीनिश इन कलर नेजल डिस्चार्ज, येलो होता है फिर ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेजल स्टिफनेस और कंजेशन फील होती है, नेजल नोज जो है आपको कंजेस्टेड फील होता है। टेंडरनेस ऑफ द फेस, मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ द साइनस आपको टेंडरनेस फील होती है। इफ इट इज द फ्रंटल साइनस द सेंटर ऑफ द फोरहेड, इफ इट इज इथमोइडल साइनस इनसाइड द ऑर्बिट, और आपके जो मैक्सिलरी साइनस है तो मीडियल साइड ऑफ द चीक्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली अंडर द आईज और द ब्रिज ऑफ द नोज। ये ब्रिज ऑफ द नोज यानी ये फ्रंटल साइनस इन्वॉल्व है। फ्रंटल हेडेक्स होते हैं, पेन इन द टीथ होता है इफ द मैक्सिलरी साइनस इज जो है ब्लॉक्ड। तो कफिंग होगी, फीवर होगा। सो these all symptoms are due to the paranasal sinuses blockage or infection, ठीक है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे दे विल गिव यू डिकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप्स एंड स्प्रेस कैन हेल्प विद एरेशन, थोड़ा सांस लेने में आसानी होती है, बट शुड नेवर बी यूज फॉर अ लॉन्गर देन 7 to 10 days। आप जो है कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ नेजल डिकंजेस्टेंट्स देते हैं, ठीक है। बट इसको बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आपने यूज़ नहीं करना, दोबारा डॉक्टर को जाके बताना है और वो स्टॉप कर देगा फिर आपकी चीज़ें, ठीक है बेटा। So this is, thank you so much. This is all about the clinicals of the oral and nasal cavity, and thank you so much.